बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज क्लासिकल मैकेनिक्स का जो वो है इसके बारे में एक दो प्रॉब्लम कराते हैं लेग्रेंजियन इक्वेशन की। लेग्रेंज इक्वेशन जो है फॉर नॉन कंजर्वेटिव एंड फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डन इट। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई Lagrangian equation on some of its, you see some of its problem. First problem is a particle of mass m attached to a spring and pulled by a force F to a distance x, find equation of motion. For example, if you have a system and in the system you have a spring along with the, for example, this is a system say and this is a spring say and this is the mass m and is placed on frictionless surface. Now, if a force is applied on the spring on the mass of the body covering a distance x, you see that according to Hooke's law, F is directly proportional to x or F is directly proportional to minus x. So, what should be its value? How we can find the equation of motion? First, the kinetic energy in this case is a half m square. But here you see kinetic energy is equal to 1/2 m x dot square. X dot represent the velocity, 1/2 m x dot square or 1/2 mv square. And potential energy is restoring what is the elastic potential energy 1/2 kx square. And we have elastic potential energy in this case 1/2 kx square and kinetic energy is 1/2 m x dot square. So we have two Lagrangian equation. If you see here we have x dot and x, one Lagrangian equation rather than theta and so on. So the Lagrangian equation is d by dt of del L divided by del x dot minus del L divided by del x is equal to 0. You see x dot and x. So d by dt of del over del x dot into 1/2 m x dot square minus 1/2 kx square. This is the Lagrangian T minus C, putting the value of kinetic energy and potential energy, minus del over del x into 1/2 x dot square minus 1/2 kx square. If you see the derivative of x dot with respect to x, this goes to 0 and again this goes to 0. So you have only the value d by dt of, and this is equal to 2 to कैंसिल हो जाएगा mx डॉट और ये जो है यहाँ 2 to कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव kx. अगेन टेक इट्स डेरिवेटिव d by dt ऑफ ये आ जाएगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू साइड पे ले जाए माइनस kx और x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस k by m into x. So this is the equation of motion when there is a mass of the body attached to a spring and that mass of the body is pulled by a force F covering a distance x. So here you see we have taken its kinetic energy 1/2 kx naught square and its potential energy 1/2 kx square, elastic potential energy. So the Lagrangian in this equation is L is equal to T minus V. So putting the value of kinetic energy and potential energy after taking its Lagrangian equation, you see here you have only x dot and x. So the Lagrangian in this case will be equation is d by dt of del L over del x dot minus del over del x is equal to 0. तो इसकी डेरिवेटिव ले ली तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया कि x डबल डॉट is equal to minus k by m into x. So this is the equation of motion in this case. And the second problem is if a particle of mass m is attached to a force centered with a force of magnitude k divided by r square, find Lagrange equation. Here you see I have taken the force F is equal to minus k by r square. Negative sign specifies its attractive nature. F is equal to minus k divided by r square. But for the conservative, in the conservative system, if the force is conservative, it means that F is equal to minus gradient of V minus del V divided by del R or minus dV divided by dr in this case. So comparing the two, minus dV divided by dr is equal to minus k by r square, cancelling
डी वी इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा के डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, टेकिंग इट्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के माइनस आर टू इंटू डी आर, इंटीग्रल ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के आर माइनस टू डी आर। तो इससे आपके पास आ जाएगा v is equal to minus k by r. This is the potential in this case. Kinetic energy in case of polar coordinate is 1/2 m r dot square plus r square theta dot square, kinetic energy in term of polar coordinates. So putting the value of kinetic energy and potential energy in the Lagrangian, L is equal to t minus v. So 1/2 m r dot square plus r square theta dot square, this is the kinetic energy, and minus minus plus, this is the potential energy, k divided by r, k divided by r. So here you see we have r dot, we have r, we have theta dot square also. So here we have two Lagrangian equation, one is Lagrangian for coordinate r and the second one is Lagrangian for coordinate theta. अगर यहाँ देखें, यहाँ हमने सिर्फ एक Lagrange equation लिया था because there was only x and x dot, but here you see, here we have r as well as theta. So two equation of the Lagrangian in this case with respect to the coordinate r will be d by dt of del L divided by del r dot minus del L divided by del r is equal to 0. अब इसकी यानी डेल एल और डेल आर डॉट की मतलब एक विद रिस्पेक्ट टू दिस इसकी डेरिवेटिव ले लें, फिर उसकी फर्दर डेरिवेटिव लें डी बाई डी टी से। इस तरीके से यहाँ देखें डेल एल और डेल आर इसकी भी डेरिवेटिव ली गई है। तो फर्स्ट केस में देखें ये डेल एल और डेल आर डॉट जो है 2m r डॉट और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, ये टर्म ज़ीरो आ जाएगा, तो एम आर डॉट आ जाएगा, या इसके अगर फर्दर डेरिवेटिव ले लें तो ये आपके पास एम आर डबल डॉट आ जाएगा। जबकि दूसरे केस में आपके पास क्या है, इसमें यहाँ डेल एल डिवाइड बाई डेल आर, तो विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव ले लें, इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव ले लें तो ये तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, और इसकी डेरिवेटिव ले लें, इसकी डेरिवेटिव ले लें तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है डेल एल डिवाइड बाई डेल आर इज इक्वल टू एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के। तो इस तरीके से d बाई डी टी ऑफ डेल एल और डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल और डेल थीटा इज इक्वल टू 0, इसकी भी डेरिवेटिव ली गई है। तो देखें एक ये है आपके पास और ये एक आपके पास 0 आ रहा है, तो इससे मुराद है कि यहाँ आपके पास ये वैल्यू सिर्फ आएगी, यहाँ आपके पास ये वैल्यू सिर्फ आएगी। तो इस तरीके से गोया आप को अगर एक को प्रॉब्लम दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इसकी मतलब है कि वो लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है वो आप मोशन मालूम करें, तो आपने देखना होगा कि मेरे पास आया आर थीटा है या सिर्फ आर है या एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपने वो लैग्रेंज इक्वेशन जो है वो डालना होगा। ठीक है, बस